Ayush Bhattacharya. This week Yes, sir. has been great. Like we uploaded our first video after a long time, and Yes. And good reactions. yeah, fair. And bro, personally, on a personal level, I Except love the one video. person, good reaction. So, but like personally, I love the video. Like, Hmm. and I think even you like the video. You're talking about the good Yeah, chemistry in it. Yeah? yeah, So yeah. it was fair, cool. But during this week, something else happened. Which is, IPL auction. yeah. What do you want to talk about it? See, we'll talk very briefly about it. Okay. But it's very interesting to see the auction. I know it's very it was hard. We should actually get uh with somebody who we know who was Huh. involved in the auction. Sure. From Sure. Yeah. Yeah. if Oh we yeah. can to understand the auction dynamics, or Very even an very interesting. expert, because see, yeah, a David Warner goes for 6.5 crores, Mm-hmm. okay, Correct. and a Prasidh Krishna goes for 10 crores. Hmm. Hmm. है ना? So the auction dynamics is very interesting. Hmm. How it changes players and how, because see, I don't know, I tell you, Punjab cricket, I think Delhi Cricket Association or Punjab, one of them Hmm. have said that the under 19 players, they haven't sent them to the auction because they feel that easy money will spoil them. Okay. So there are a lot of dynamics attached Very to this. There correct. are a lot of Yeah. I intricacies. mean, bro, can you imagine? Can you imagine? Tim David. Tim David getting more money than David Warner. I mean, Yeah, a normal person like me and you, we can't explain that, right? yeah, yeah. See, auction is like one thing Joy says. Mm-hmm. Bhattacharya. Joy Bhattacharya. Bhattacharya. Joy Bhattacharya says that whatever happens on the auction table Mm-hmm. while selecting a team, in a way, at times you should forget the price Okay. and just select on competence at that level. Okay. Mm-hmm. Yeah, obviously, if you have paid for somebody, you want them in your team. But Correct. at times it is not in your hands. You do not want to pay so much, and you get a more valuable player at a lesser price. Fair, That does fair, not fair. mean that It the it one with the ultimately gets compensated. किसको ज्यादा yeah, मिल जाता है, किसी को कम like मिल जाता है. Correct. if you see Glenn Maxwell, Mm-hmm. Glenn Maxwell. और नहीं, एक तो बात देखो, to make sense of this, Hmm. तुम जब 90 करोड़ लेके बैठे हुए हो, हाँ. तुम तो उसको खर्चने के लिए बैठे हो ना, हाँ यू टू हाँ हाँ स्पेंड हाँ. इट. तो Precisely. वो हाँ. एक को 15-7 जाए, या एक और 15-7 जाए, या Hmm. 11-11 जाए, है ना, Hmm. बात तो एक ही है. अबे ठीक है. क्योंकि देख, टू बी फेयर, लास्ट ईयर हर्षल पटेल 20 लाख का था. तू देख ना, तो वो और तेरे को 20 लाख वाला 30 और विकेट दे रहा है. संकेत, एक बात, आई डोंट नो दिस, जो पर्स बचता है वो क्या जाता है अपने पॉकेट में, या आई थिंक वो बचता है, वो मतलब ऐसे ही वो वेस्ट होता है और उसका कोई काम उससे, नहीं है. मैं सोच रहा था कि मतलब बचता है, कुछ होता है उससे, नहीं होता है नहीं, वो ऐसे ही जो, पड़ा है, वो बस एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी है जो अगले साल यूज हो जाएगा, बस उसके वो ऊपर आप. हाँ हाँ. उसका कोई वो फायदा नहीं है. रिकन्फर्म वो रिकन्फर्म करना पड़ेगा. हाँ. बट जो भी हो, हाँ, कि देखो, तो जब इन्हें सिलेक्टिंग टीम, तो वो देखना हम्म. नहीं चाहिए. देखना करेक्ट. चाहिए कि उस टाइम कौन फॉर्म में है, लेट्स में कौन अच्छा कर रहा है. ऐसे हम्म. वो नहीं किया था. One more talking point before wrapping up the auction is Suresh Raina. Suresh Raina, unfortunately, legend of CSK. See, I won't say he's the consistent of CSK. He is, but I won't say he's had a great season, which he should have had, like a Virat Kohli 2016 Fair. or a Warner every year. Right, Hmm. Warner goes for 500, 600. The Warner is every year. Every year, yeah, correct. Okay, so he hasn't had that. Hmm. But yeah, so what's your take on Raina getting dropped? Do you agree with the public sentiment? Yeah, bro, I Or think public sentiment never matters in this because I mean we're always so extreme in our thoughts. To be fair, I think Uthappa, as you have mentioned before, like we talked before, right? And I think Uthappa deserves a spot in the team more than Suresh Raina does, even though undoubtedly Suresh Raina is a better player historically speaking, not right? now. Historically speaking, correct. So I mean, so just because X player played very well in the past and is not performing, not even trying to perform, not even showing any sign of Exactly, performance. that is the point. Not performing doesn't matter. Huh. Dhoni, I'm telling you, Dhoni, being the loyal person he is, he wouldn't have cared if Rana didn't perform. Correct. He just wanted him to show Bro, some bloody intent. He could have played any first class match, right? Any Ranji team is happy to have him. And look at his fitness also. Correct.
And see, people are saying Dhoni's form has dipped also, but you can't compare Dhoni and Raina. I mean, Dhoni is a captain. His captaincy is 30 runs, 40 runs. And True. Dhoni, Kohli, See, Rohit are on one level. both these people Okay. contribute in different ways. Yeah. See, It is not Dhoni, comparable, Kohli. to be fair. Yeah. Dhoni, Kohli, Rohit are on one level. Hmm. These are Raina, Yuvraj, if I may say so. Fair, yeah. Sehwag, or you know, Tendulkar. See, Tendulkar, Dhoni, Kohli are a different level. Sehwag on a high level, but a bit lower than all these people. So yeah, True. I somehow feel that I agree. A lot of people are saying boycott Chennai Super Kings. Yeah, man, that is complete But see, bullshit. it is corporate culture. Sure. It is corporate culture, and even with that, Chennai is such an emotional team. Even with that, but something must have happened, or 100%. some trust. And you have a lot to say about Mr. Raina also, based on your interactions. Do you want to Yeah. say or no? No. Those are personal opinions. Those are personal opinions which are not to be expressed publicly. Not opinions. Opinions, Something you could see. facts. Sure. Okay. Yeah. Anyways, moving ahead. Something very important for me, right? Of course, it's about you, but it's important for me. Like, I think both of us, we have coinciding choices in life. Okay? And like you going to college a year earlier than me, you're a live case study for me. Because living in Mumbai, I have no idea what is happening right there, right? But because of our interactions almost every day, I get an idea, I get a fair idea. And I have noticed you change. You initially, like, it's about what, 2 months now, like constantly staying there. I'm not talking about when you came back to India. Leaving that, staying here. Yeah, 2 months. A bit more than 2 months. Around 3 months. So I think I have noticed you change within this period only, like your choices, what do you want to do. Initially you were like, let's be honest, you wanted to explore more, right? Like, okay, let's party and all, freedom shared and all, correct? Now you said that you're bored of that life, correct? No, I still do that. 100%. Oh, I have a fire alarm at my place. Really? This might be a passing one. Really? Right. Just check. Just check. Bro, that Put this damn. in the podcast. Sure. Check. You can go ask someone. Anyway, what was I saying? So I've seen, even though you want, you are you have that in you, like you want to party and all, you want to live the free life, sure. Sure, but sure, but you said you're bored of that. Can you explain more about that? You're bored of that life. No, bored of that, not really. I like that. Sure. But I've always had this feeling about parties. I don't get the, like, I don't know, maybe because deep down I'm I heard something background mein. Maddie shouting. Deep down, because I am an introvert. Okay. Deep down. Okay. This is all my defense mechanism, if you might say so. Got it. Deep down, I'm a bit of an introvert. I like staying put. So so that's why maybe that I find parties at times a bit, and it's not that it's been since, and me and Mr. have discussed, because even Mr. is like me. So we have discussed a lot of times about this. It's just random movements and coming back without any purpose. Sure, you're actually right. I think, but I'd say one thing about it. I think they're a very good picture of what the real world is like, right? You don't know what you're doing. You're just doing it for the sake of doing. Yeah. Tum notice karo, just for the sake of... I'll tell you. Sure. Yesterday. It's crazy. It's just, see, I say no purpose. I want that 2 examples I have. I won't go into one of them. I'll go into the other. Okay, sure. Okay. So you dance. So I was at a party yesterday. So you dance with this guy, and you're not holding hands. I mean,
I say you're like buddies, and then you go out of the dance floor, don't even know each other. Okay. Okay. So this is what it is. That is fun though, like, Yeah, it's fun. It's meeting fun. new It's people. fun. Yeah. Exactly, it's fun. Hmm. I'll give the next example because you know what the example is. Okay. Sure. But yeah, no, I'm not talking Basic. about friends, obviously. Like Huh. strangers. It's okay. But the thing is, uh, just for the sake of efficiency, in everyday life, you do things which you don't even know that you're doing, right? Subconsciously हो ही जा रहा है. For example, right now, even if I'm super sleepy, ठीक है, मैं उठा, my first thing is going to the kitchen, gas on करके कॉफी बनाता हूँ मैं. और ये that is your reflex sort of a thing, right? exactly bro. ये And इतना अच्छा कैसे हो गया? मेरा तो फोन लेके बैठ जाता हूँ. अरे नहीं ब्रो, मेरे को आदत है, अब आदत हो गई है. लाइक उठते के साथ ही मैं आंख बंद भी रहेंगे मेरे, मैं अपने में जाऊंगा, बना के आ जाऊंगा, ठीक है, या अच्छा, फिर और अच्छी आगे आदत है. जाके वो एस्प्रेसो ले लेता हूँ. तो मतलब दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड व्हिच इज हैपनिंग. एंड आई हैव नोटिस कि इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है. लाइक समझ गया, पहले मेरे को फ्रेश होना, शक्ल वकल धोनी पड़ती थी, व्हाटएवर, एंड देन मेरे को जाना पड़ता था लेने. बट मैं तो अब क्या शक्ल भी नहीं धोई है, बैठ गया मैं. anyway, so for the sake of efficiency, you don't even know what you're doing. That was just an example. And you just do stuff, right? So I think parties, that's the thing. You just attend parties just to socialize because, of course, we are social animals, right? But in that party, you don't know what you're doing actually, right? You're just doing casual movements which you do in everyday life. Not everyday life, fair. But, but, but what about now, Ayush? Like, you were talking about museums. Why do you want to go to museums? No. See, I see. Again, I like parties and everything Sure. and to be at them. But see, it's I'll tell you something about myself. Okay, I'll give this very openly. I'll say it Huh. that I am perpetually sad and Okay. depressed all the Okay. time. Okay. Very sad thing to say, but I'll tell you why. Because I don't know. It's the thing with me. People might relate. Is that when I get something, I value it. Huh. I do value it. And the thing is, this is in my internally thing, which Okay. happens and I can't stop it. I know it's wrong and I try to combat it. Okay. For example, when I get something, I try to, like, I'll tell you. So in Mumbai, or when I was there this month or December, Calcutta, I was like, I want to party and all that. And now in the party yesterday, okay, I was having fun and everything and all that. Correct. But then I came back, I was like, I want to go back home. Okay. Understandable. Huh. So I'm always sad. ये तूने बहुत By that important way. बात बोली है. देखो, I think this Yeah. is the case with almost everyone in the world, Ayush. Almost everyone. This is not something unique. don't think so. I'm very sorry to say, but you're not unique, my brother. No, I don't think so. Yeah, because it's a very disturbed state of mind to be in. It is. Obviously, I've overcome that and all that. That Sure. I can overcome it. But it's a disturbed state of mind to be in. That always, and it's like it's just FOMO, and it's a FOMO of everything. And it's like every there is something else. And देखो पता है, मैं I think this was the case with me as well. थोड़े कुछ सालों पहले, like कुछ मतलब 1-2 साल पहले, ठीक है. Now I think I subconsciously noticed it. Now that you're saying, अब मैं वो realize कर रहा हूँ. But what I do now is जहाँ जिस मैं मोमेंट में हूँ, उस मोमेंट को पूरा निचोड़ने का कोशिश करता हूँ. नहीं, वो तो मैं भी करता हूँ. सुन तो, feel every bit of it, and probably not even think about the moments I'm missing at that point. Like completely neglect. For example, if I'm in Calcutta with family, you can, bro, my friend, like Arnav Rao, one of my best friends in Mumbai, like वो परेशान हो जाता है क्योंकि मैं 1 महीने तक उससे बात ही नहीं करता, ठीक है. which is not a great thing, but sure, ये मेरी आदत हो जाती है कि फिर अगर मैं फैमिली के साथ हूँ तो पूरा टाइम मैं फैमिली के साथ ही हूँ, ठीक है. अब यहाँ के जब मुंबई वापस आता हूँ तो मैं जैसे मान ले फ्रेंड से मिल रहा हूँ
तो फ्रेंड्स के साथ ही हूँ मैं, फिर मैं अपने क्या नाम है फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाता, फिर इट्स अ ये प्रॉब्लम अच्छी फॉर मी। बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है वैसे। अबे वो तो मैं कह ही रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है नहीं नहीं, अबे। मैं तो दोनों का मिला के चलता हूँ, ठीक अबे है, देख नहीं मेरा देख उसमें मिलाना नहीं। उतना, मिलाना उतना इजी नहीं होता ना। जैसे मान ले इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट वीकनेसेस एज वेल, टू मेंटेन सोशल मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स आफ्टर डिस्टेंस अराइजेस, बिकॉज आई बी तो क्या ऑनेस्ट। हम दोनों भी हुआ है क्या बस? अबे नहीं, हाँ, you're a rare case. I can't lie, and I think I'll try when I come, go to uni, to in fact, just try to make contact with people who have नहीं left नहीं, behind, or फैम who फैम are फैम somewhere else. फैमिली तो रखना ही चाहिए। वो तो 100% वो तो है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट कैजुअल सोशल कांटेक्ट भी मैं ट्राई करूंगा हाँ, कि नॉट टू let go of them. Yeah, I think I हम्म, think I feel that is important. अच्छा, My this podcast was like, the purpose behind this one, it was कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लाऊं और तेरे से पूछूं, क्योंकि हाँ, अभी मेरे को तेरे से बहुत कुछ जानने का मन कर रहा था अचानक से। हाँ। ठीक है, सो तो बट टॉकिंग अबाउट द पार्टी कल्चर, वन मोर थिंग, इट देखो, इट इज सेम थिंग कि जो तुम्हारा थोड़ा मोनोटोनस भी बन जाता है, अच्छा। थोड़े थोड़े। और तू जानता है मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे कुछ कुछ दिन होते हैं जहाँ मैं एकदम फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाता हूँ। हाँ, बहुत इरिटेटिंग होता है ठीक वो। है, तो अब मैं वो दिन ढूंढ रहा हूँ कौन सा ले पाऊँ, अरे भाई, हाँ। क्योंकि देख एक आज काम नहीं करना, होगा, एक काम आज नहीं करना, होगा, वो कल कल नहीं कर ले, होगा, कल या कल परसों भी कर नहीं ले वो, होगा, परसों कर ले। परसों भी नहीं होगा, वीकेंड में करना पड़ेगा मुझे। अरे कल भी नहीं होगा, कल भी नहीं ठीक है, होगा, हाँ, फिर वीकेंड में वीकेंड में करना पड़ेगा मुझे। तो उससे ताकि देखो कुछ नया मिले, इसलिए ताकि जो हाँ यार, मोनोटोनस लाइफ हो बहुत रही है। बहुत दिन हो गए। फिर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष, हाँ, एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन कह सकता है तू, बट हम्म, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्पैथी? सिंपल, समथिंग, ओके, हाँ, पहले बता, बोल बोल बोल। एम्पैथी, ये व्हाट डू सब यू थिंक अबाउट इट? दोगलापन है, ये सब दोगलापन है। ये सब दोगलापन है? अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं मजाक, एम्पैथी होनी चाहिए, और क्या बोल सकते हो। नहीं मतलब, एम्पैथी, क्यों नहीं चाहिए? तू बस जस्ट बिकॉज इट्स अ पॉपुलर टॉपिक, पॉप लाइक इट इज मेजोरिटी अग्री करती है इस बात से, होना नो, चाहिए, ऐसा थोड़ा ना सब हो आई सकता है। फील इट इज समथिंग व्हिच पीपल फेक इट, ओके, obviously. हंड्रेड But परसेंट it is, see, I'll tell you something. This is something I've learned. हाँ, Right? Survival of the fittest हाँ, हाँ, says that humans who can survive, who can adapt, are the ones who survive. हम्म, हम्म, Okay? But there has been evidence saying that हम्म, without pro-social behavior, हम्म, none of us will be able to survive. ओके, ओके, Right? Like I'll हम्म, tell you something, it's not just for humans, and it is how we develop. हाँ, Without groupism, without help of each other. हाँ, Like I'll tell you, there is this which I was learning the other day. हाँ, There is this fish, हम्म, okay, who cleans the mouth of a bigger fish. ओके, Cleans वेरी the इंटरेस्टिंग, mouth. ओके। But that fish only gets eaten later on, has the अरे opportunity भाई, to get eaten. हैज But योर वे, ओके, yeah, but it does happen, but it does. So without pro-social behavior and adaptations, हम्म, okay, although it goes against the thing, without helping हाँ, or without showing support, there हाँ, is no way human race can evolve, गॉट इट, गॉट इट, right? बट So that's why हाँ, I feel, yeah, I know, that's why I feel that empathy हम्म, is a skill which people should have, but there should also be an extent to it. But I'll tell you something, हम्म, Sanket, you might agree or disagree. I've seen this in the UK because I हाँ, have only been in the UK. हाँ, Like I've been to other countries, but studying lived, and या like या, I have not lived for so long in any other country other than India. हम्म, So in the UK, I've seen this, that, and I think this is true for most places abroad, हम्म, that the sympathy levels are more than in India, at least on the face. हाँ, 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 On the हाँ, face, you know what I'm हाँ, saying? हाँ, 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 like apart from sympathy, like emotions, like nice to meet you, No, hello, no, not even that. okay, What do I mean? Example, if a girl is going through something, they'll say take a mental health break. okay,
है ना? श्योर एक और एग्जांपल है when अभी इसलिए तो बोलते हैं ना these are first world problems like it's a joke of course it's a joke but हाँ people say हाँ see first it is actually correlated. I'll हाँ tell you why. That's a good point. हाँ देख अपने यूनी में क्या बोलते हैं, मेरे यूनी में जब हम लेक्चर जाते हैं ना साइकोलॉजी के, हाँ हाँ तो कोई जाने वाला हो अगर तुम्हें जल्दी छोड़ दे, हाँ तो की वो ये है कि सोच हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है लेक्चरर बोल देती है वी हैव सेंसिटिव कंटेंट, हाँ इफ यू वांट टू यू कैन लीव द लेक्चर रूम. अच्छा अच्छा ओके ठीक है, और अपने इंडिया में और एक अपने इंडिया में जो बंदा सोचता है कि यार मुझे मार्क्स आ जाए, सेंसिटिव हो ना हो. आई थिंक देखो इसका रीजन क्या है देख इन कंट्रीज वेयर आई थिंक ये मैंने किसी स्टैंड अप कॉमेडी में देखा था ठीक है बट यू नो एवरी प्लेस हैज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स देख मैं यूके के कल्चर को ज्यादा जानता नहीं मैं यूएस के कल्चर को यूके के कल्चर से ज्यादा जानता हूँ ठीक है तो अगर हम यूएस का एग्जांपल है यूएस इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू थिंक दे हैव दे आर नॉट गरीब Not राइट food, what they have food, water, I don't know. करेक्ट दे हैव तो ऑल द बेसिक कुछ भी खा लो. नेसेसिटीज अब उनको एंड देख ग्रोथ कैन नॉट बी स्टैग्नेंट ठीक है ग्रोथ तो फैसिलिटेट होना ही पड़ेगा वरना कंट्री बोर होके मर जाएगी इसीलिए देख इसलिए प्रॉब्लम्स ढूंढा जाता है और उनको एड्रेस किया जाता है आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इसीलिए उनके इतने पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स होते हैं ना, करेक्ट कि सस्टेनेबिलिटी, एवरीवन जो कि नीड्स पर्पस एंड अश्लील ग्रोवर मानता नहीं है. अश्नीर ग्रोवर मानता नहीं अश्लील, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर इंडिया का तेरा एंटरप्रेन्योर होगा हाँ. एंड प्रिसाइज अब भाई एक शार्क एक टैंक में भी एपिसोड करना चाहिए, वो बड़ा मजेदार है शार्क करेंगे टैंक. श्योर करेंगे भाई अरे मेरी बात लेकिन ये है कि देख बाहर तेरा क्या है एग्जाम्पल देता हूँ रेसिज्म ठीक है इट इज हाँ वेरी प्रेवलेंट अब्रॉड ठीक है सेंसिटिव सेंसिटिव श्योर बट सेंसिटिव है तो क्या बात नहीं कर सकते क्या हाँ ठीक है बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ. हाँ अबे देख इट इज अ वेरी प्रेवलेंट प्रॉब्लम करेक्ट हाँ बट डू हाँ यू थिंक इंडिया में रेसिज्म नहीं होता है श्योर होता है हाँ अबे देख इंडिया में तो इतना लेकिन इंडिया में निग्लेक्ट जिस तरह से किया जाता है अगर आई थिंक ये कुछ यही स्टैंड अप कॉमेडी में था कि अगर तुम इंडिया में जाके बोलोगे कि एक्स आदमी मेरे को काला बुला रहा है तो वो तुम्हें भेज देंगे ना बोलेंगे भाई और भी काम है हमारे पुलिस के बारे में बोल रहा हूँ अगर इंडिया में तुम्हें कोई काला बुलाता है एंड यू फील दैट्स अ रेसिस्ट कमेंट और तुम पुलिस के पास जाओगे कि हाँ अनफॉर्चुनेटली हाँ अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ डिजायरेबल इंडिया सिचुएशन पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट. बट एग्जैक्टली तो मेरा कहने का मतलब है कि हर कंट्री के प्रायोरिटीज अलग होते हैं ठीक है इंडिया में उससे भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में आदमी को पीने को पानी नहीं मिल रहा है मतलब पहले इंडिया में सोच अगर लेबरर जा रहा है उसको काला बुला रहा है, बोलेगा बुला ले मैं काम तो कर लूं. हाँ उसे उसे भाई 2 वक्त का खाना चाहिए उससे पहले उसे फर्क नहीं पड़ता ठीक है इन दी एंड वही अबे even हाँ कंप्लीट कर मुझे फिर नहीं मैं बात मैं बोलूं. हो गया बोल नहीं नहीं इन दैट वे संकेत, इंटरेस्टिंग पॉइंट है. डोंट यू थिंक दैट कैलकाटा एक्ट्स लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इट डज इन दैट इट डज इन दैट सेंस इट डज कि आइडियल्स होना चाहिए, ये हाँ होना चाहिए, मतलब वो है because नहीं. they have a very rich history I suppose क्योंकि हाँ they take प्राइड है. they take pride in their history literature everything right हाँ तो क्योंकि हाँ अगर तू बंगाली काम करने जा रहा है और यू हाँ टेल हिम कि फिश अच्छा नहीं है, वो तो काम ही छोड़ देगा. हाँ you're right हाँ, fair वो I mean एग्जैजरेशन है बट हाँ होता है. जो 100% इमोशनल अबे हाँ इसलिए तू जैसे अब यही पॉइंट उसमें आ जाता है तेरे बात में कि हाँ चलो भाई मेरा तेरे से यूके में इंटरेक्शन हो रहा है ठीक है मेरे को पता है कि तू गरीब नहीं है ठीक है तेरे वैसे कोई फाइनेंशियल ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं कंपैरेटिवली राइट टू एनी अदर पर्सन फ्रॉम एनी अदर कंट्री राइट तो मैं तेरे को थोड़ा और खुश करना चाहूंगा इसलिए मैं चलो बोल देता हूँ नाइस टू मीट यू ओ सो आई फील सो सॉरी फॉर यू राइट और तू ये सिर्फ यूके नहीं तू इंडिया के हायर इकोनॉमिक क्लासेस में भी देख सकता है इट इज नॉट जस्ट हाँ यूके एंड हाँ सही यूएस सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये इनमें है. हाँ और मैं इस रीजन आई डोंट थिंक ये है, पता नहीं क्या है, हाँ बट हाँ इनका, हाँ ये सही बोल रहा है क्योंकि अबे और इनको एक अबे और एक रेस्पेक्ट चाहिए एडिशनल. जैसे मैंने 100% बोला, आई टेल यू उस दिन मेरे साथ क्या हुआ. मैं गया था जिम में दोस्तों के हाँ साथ. ठीक है तो दिस इज क्या इंडिया होता है ना जिम, नो नो यूके, यूके ओके आई वेंट टू द जिम. सो मैं कार्ड मतलब हाँ आईडी हाँ कार्ड पंच हाँ करके एंटर. तो मेरा हाँ आईडी कार्ड पंच नहीं हो रहा था, तो आई
told them, can excuse me, हाँ open can you open this? हाँ ठीक है, मैंने नॉर्मली बोला, वो ऐसे खड़ी हुई है ऐसे गुस्से में, हाँ बोला मैंने क्या बोल दिया, हाँ व्हाट हैपेंड, बोला से प्लीज, हाँ ठीक है, गॉट इट गॉट मैंने इट बोला हाँ प्लीज। तो श्योर हाँ ये नहीं कि मैं रूड होने वाला था, हाँ 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 आदत ही नहीं है ब्रो आदत आदत ही ही नहीं है, जैसे भाई वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा, हाँ जो बंदा खाना देने आता है ना मुझे, सो हाँ मैं किसी ऑर्डर किया मैंने हाँ खाना बाहर से, हम्म, उसका क्या एटीट्यूड होता है, यू वोंट बिलीव इट। और क्या दिक्कत पता है, मैं तो बोलता कि इधर तक आओ, नहीं आओगे तो मैं चले जाऊंगा। अच्छा 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 हाँ ठीक है, तो हाँ सोच हाँ सकता है स्विगी वाला हाँ या जोमेटो वाला हाँ इंडिया में बोल रहे इंडिया कि में तो अब इधर, बेचारों से मजदूरी कराते हैं भाई लिजिट हाँ हम्म ये लोग रिच होते हैं, ये जो आते हैं, हंड्रेड ये लोग परसेंट हमसे रिच होते हैं, ये लोग बोलते हैं आई एम स्टैंडिंग हियर, इफ यू वांट टू कम कम, डोंट कम, आई एम गोइंग विद इट, आई डोंट नीड मनी। हाँ तो श्योर मैं हाँ क्या, मैंने बोला कि यार ये क्या, वो क्योंकि जो पहले पहले आया था, मैं तो ऐसे ही बोला, भैया नहीं है कभी, अबे यही बोला तो डोंट टच क्वालिटी ऑफ माय लाइफ की बात हो जाती है ना भाई तू हाँ एग्जैक्टली, इकोनॉमिक्स में तो इतने साल से तू पढ़ रहा है यही तो है दो क्वालिटी साल ऑफ से लाइफ दो साल क्वालिटी ऑफ इतने लाइफ साल से नहीं, 2 साल से। अबे तू नाइन नाइन टेंथ में तेरा इकोनॉमिक्स नहीं था क्या ओ हाँ था, शिट देखो शिट अरे अच्छा शायद ये नाइन टेंथ की बात कर रहा है 11 12 तो पढ़ा ही नहीं होगा सर ने है ना मुझे याद है सबको, इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड करके। श्योर 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 ठीक है। अरे बट देख हाँ तो यही बात आ जाती है लेकिन हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं हमें हमें बात करनी है उसके बारे में एम्पैथी के बारे में आई थिंक एम्पैथी इज काइंड ऑफ ओवररेटेड बिकॉज श्योर feel bad for a person if they're suffering but everyone's suffering don't give them special priorities just because उसका पैर में चोट आई है मैं बस ये कहना चाहता हूँ तो इट डिपेंड्स वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। हाँ एग्जैक्टली एक exactly. अभी फैमिली आज में जैसे और एक प्रीवियस पॉइंट फैमिली पे या दो, प्रीवियस पॉइंट में तू एक नोटिस कर ये खाली सुपर रिच ठीक है सुपर रिच इकोनॉमिक क्लासेस में है इंडिया में ठीक है नहीं नहीं मैं देख, जो दिस इज द एक प्रॉब्लम, दिस इज हाँ नहीं नहीं ऐसी, ये तो वो बात होगी कि डिप्रेशन, उसको नहीं मैं इसीलिए वो तो, कह रहा हूँ उसकी बात कह रहा हूँ बीइंग अच्छा वो जो बीइंग प्लीज बीइंग हाँ टू पोलाइट, बीइंग रिस्पेक्टफुल तो ये नोटिस कर और बेसिकली अर्बन अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ ठीक है जो रूरल इंडिया में अमीर होते हैं उनके पास पैसा जरूर है बट दे हैव अदर प्रॉब्लम एज वेल उसे भी अगर तुम उसे भी प्लीज बोलने की आदत नहीं है क्योंकि उसकी भैंस दूध नहीं दे रही है भाई उसे और भी प्रॉब्लम है लाइफ में तो उसे नहीं वो तो आदत ठीक है, नहीं है देख एम्पैथी डिपेंडिंग ऑन तू कहाँ बोल रहा है, हाँ आई गेट द पॉइंट। हम्म एम्पैथी देख, क्योंकि देख अगर फैमिली और फ्रेंड्स एम्पैथी दिखानी चाहिए यार, ऑब्वियसली हेल्प श्योर सपोर्ट करना चाहिए, श्योर श्योर बट अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, हाँ तो मैं एम्पैथी दिखाऊंगा, ये नहीं क्यों नहीं दिखाऊंगा हाँ कि if somebody is going, because देख अगर मेरे देख, क्योंकि देख एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हाँ ठीक है, यू हैव टू टेक केयर, बट एक एक्सटेंट तक मैं दिखाऊंगा देख जैसे उसमें। आयुष शार्क टैंक की तू इतनी बात कर रहा था शार्क टैंक में हम्म। जैसे मान ले लोग अश्नी वाई वर पीपल वो क्रिटिसाइजिंग अश्नील प्रेग्नेंट ग्रोवर लेडी थी ना जिसको उसने करेक्ट रुलाया था, आई मीन ब्रो लेकिन इन दी एंड वो नहीं अगर वो जस्ट भी बिकॉज ठीक नहीं था यार, वो भी हाँ ठीक नहीं था। क्या देख अगर हमारे दिल से एम्पैथी ये सब चली जाएगी तो कोई भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकता अच्छा दुनिया में, हम्म लॉजिकली। हम्म बट हाँ, क्योंकि ऐसे nobody can coexist because everybody has pain, ओके तो उसका कोई सुनने वाला नहीं होगा, समझने वाला नहीं होगा, nobody can coexist। श्योर But saying that, in a हाँ corporate setup or a work setting setup, at times तुम्हें you अपना can't be पर्पस asking समझना पड़ेगा for, कि you इफ can't इट्स be अ सोशल asking for too इंटरेक्शन और much. इफ इट्स अ वर्क इंटरेक्शन Yeah, you can't be asking for or अबे giving. बेसिकली यू कांट एक्सपेक्ट मी टू पे यू जस्ट बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट राइट दिस इज जस्ट एन No, एग्जांपल no, बाय द अरे वे अरे नहीं नहीं, ये पेड होता है, तो that is fine. No, no, that is, अबे that's, तू ये बहुत वही ये सब मत बोला कर, नहीं that is क्यों no 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 no, that is fine. हाउ Being कैन आई pregnant, इन्वेस्ट हाउ कैन आई इन्वेस्ट माय no no, अबे no हाँ no, listen, being हम्म pregnant is a हम्म different thing. Being हम्म pregnant में क्या होता है ना, कि देखो if you're such a multi-million dollar company, and not हम्म everybody is pregnant at one श्योर at one श्योर point, श्योर या you can pay pregnancy leaves. The हम्म thing is यार एक बात बताओ, हम्म एक बात समझो, ये हम्म बात तू गलत बोल रहा है। हम्म अगर मैं प्रेगनेंसी ये रखूंगा नहीं, ये सब नहीं रखूंगा, तो मेरे हम्म एम्प्लॉय नहीं आएंगे, काम ही नहीं करेगा कोई, अगर ये नहीं बेनिफिट्स मैं बट दैट्स दूंगा अ नहीं। डिफरेंट पॉइंट दैट्स ठीक अ है, कंप्लीटली दैट इज द डिफरेंट सेम, पॉइंट नो हाँ नो, दैट सेम पॉइंट। अच्छा अगर मेरे एम्प्लॉयज ही नहीं आएंगे, तो हम्म मेरा रेवेन्यू कैसे बनेगा बाद में, मैं वो तो 9 बजे हंड्रेड चला वो तो गया है तो वो 11 तो बजे से क्या बनेगा। तेरा मैं एम्प्टी तेरा क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर मैं तेरा empty- एम्प्लॉयर हाँ मैं कंट्रीब्यूशन हो गया वो तेरा नहीं, प्रेगनेंसी लीव्स एंड ऑल दिस हेल्थ बेनिफिट्स शुड बी देयर,
क्योंकि एंड ऑफ द डे यार हमें तो कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए. हम नहीं नहीं we are not आयुष तू समझा नहीं. we are not सुन cogs ध्यान से in a सुन. machine. ध्यान से सुन. We are ध्यान not से cogs सुन. in a machine. सुन ध्यान से सुन मेरा बात समझ. मैं कह रहा हूँ these are two different topics. If तो we सेम merge, टॉपिक. no no I don't think so. क्योंकि first एक हो गया कि हाँ the employee they should get, you know, they should get all the facilities, right? They should get, basically why is an employee working? To gain happiness, right? अगर वो परेशान रहेगा तो उसका ultimately purpose ही खत्म हो जाएगा, right? हाँ हाँ That's a हाँ. different thing. But you can't expect me to go to, basically for example I'm pregnant, ठीक है? मैं किसी अमीर आदमी के पास जाऊंगा, बोलूंगा oh sir can you give me money because I'm pregnant? You can't do that, right? नहीं. It's अरे I'm tech. talking about the अरे I'm हाँ talking about अगर नहीं मैं प्रेगनेंसी लीव्स की बात कर रहा हूँ, जो पेड वो तो प्रेगनेंसी भाई लीव वो तो होता है. नो डिबेट, ऑफ कोर्स वो तो वो तो नहीं, इम्पोर्टेंट है. तो बात तो एक ही हो गई ना. कैसे हो गई भाई पैसे बात? प्रेगनेंट और मैं कह क्या, रहा. प्रेगनेंसी के टाइम पैसे मिल रहे हैं तो वो तो इधर भी मिल रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ एम्पैथी कहाँ नहीं काम आएगी, जहां तुम काम कर रहे हो, तुम काम के दौरान इनकॉम्पिटेंट हो और तुम काम के लिए एक्सक्यूज दे रहे हो कि यार ये मुझसे बात नहीं कर रहा, ये नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा ये नहीं तो नाउ जब आई एम टॉकिंग कोई अबाउट लीव शार्क ले. टैंक. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वो शार्क टैंक वाला एपिसोड, यू नो, क्योंकि जस्ट बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट तुम्हारे अच्छा प्रोडक्ट में दम उसकी नहीं है. बात कर रहा है. तो देखो क्या लगा. अरे मुझे लगा तो कंपनी में जो होते हैं, जो नहीं अभी तो लेडीज वही तो वो मैं कह रहा हूँ इसलिए प्रेगनेंसी तो. लीव लेते हाँ हैं. नहीं तो वो तो डिफरेंट टॉपिक हो गया ना वो तो. अच्छा हाँ, That वो see तो that ऑब्वियसली okay वो तो guys, दूसरी चीज है. this is a very good example. That is why you should be a good listener in life. मैं तो हुई. साले क्या 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 हुआ? ओ नहीं, अबे क्लास है मेरा, रैप अप कर 3-4 अच्छा मिनट अच्छा में. अच्छा. एम्पैथी में फाइनल थॉट देके. Finally like empathy में final thoughts क्या देने हैं bro? I mean अरे just हाँ try वो to दे understand दिया. there's a difference between your responsibilities हाँ and what you deserve. Basically हाँ अबे I think it's about duties and responsibilities. Like yeah हाँ. sure you have. Like हाँ बोल बोल yeah, बोल. complete. Then I'll tell you a bad example of what empathy should not be showed. Okay I'll tell you. basically you can, for the sake of empathy you can't run from your duties and responsibilities. You will get all the rights that you want, ठीक है? But you will get and of course you cannot coexist if you don't have feelings for other people, sure. But just for the sake of that sympathy, you cannot give excuses by not working. No, that is true. That is true. That is true. That No, that's it. I'll give you an example of when empathy should not have been shown in my life. I think I've told you. So back in 7th or 8th grade, हाँ or 8th grade, I think, if I'm हाँ 8th grade specifically, in Shivnandar only. हम्म So we had a girl, not naming her. I think if Shivnandar people say they'll know who it was. हाँ We had a girl in our class. So unfortunately, when she was very small, her father had passed away. okay Okay. So what happened was, and she was not good at academics. okay And very unfortunate हाँ that हाँ her हाँ father passed away. 100% हाँ She was 5-6 years. When she was 5-6 years, that time, so if 8, she was about 14-15 years. हाँ So it was 10 years since her father. So what happened was, during the exam, when she did not know the answer, she started crying and saying, "I'm remembering my father. He has passed away, okay. and I'm sad." So that is one place where empathy should not be shown. देख just because this is a personal example I cannot comment on this क्योंकि क्या पता सही में हो रहा हो भाई, मैं बोल के उसकी नहीं नहीं लाइफ नहीं खराब नहीं करना नहीं चाहता. नहीं 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 मैं बोल रहा हूँ कि मैं sticking my neck out and saying that is the thing when you're giving an exam. नहीं what if सही में Every कोई एपिसोड one हुआ नहीं, कोइंसिडेंस. एक एग्जाम ठीक है, 2 एग्जाम ठीक है, अच्छा every exam, हर एग्जाम. क्या पता वो उससे लाइक कॉन्स्टेंटली बैटल कर रही हो, आई डोंट नो. नहीं नहीं वही तो फिर स्कूल छोड़ दो. हाँ फेयर हाँ मतलब तुम्हें फिर उसके ऊपर सर्टिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए. हाँ 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 तुम स्कूल छोड़ दो, होम स्कूलिंग करो. हाँ वो कर सकते है ना, हैं. ठीक है. So with that, us two unempathetic souls, ruthless Ashti Grovers. We are not Namita Thappers, we are Ashti Grovers. We are Ashni Grovers. ठीक मुझे है. अब तुम्हारा प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया. तुम अपना बिजनेस बंद कर दो. ऐसे नहीं, हाँ ठीक है.